नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नए कोर्स के बारे में जो फर्स्ट टाइम हम हमारे एकेडमी में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हाईली डिमांडेड है इंडस्ट्री में। हर कोई इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के रिलेटेड भी ये काफ़ी डिमांडेड है, दैट इज AI एंड डेटा एनालिटिक्स इन द हेल्थ केयर। तो इसमें आपको काफ़ी सारी लर्निंग मिलेगी। ये कंप्लीट टेक्निकल कोर्स है। इसमें आपको काफ़ी सारे टूल्स जैसे पाइथन रिलेटेड अलग अलग टूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये कंप्लीट हैंड्स ऑन लर्निंग भी आपको मिलेगा और साथ में हम आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। ये काफी आइडियल कोर्स है सारे फ्रेशर्स के लिए जो डेटा एनालिटिक्स में करियर करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं, चाहे आप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप क्लिनिकल रिसर्च में हो या कोई भी अदर सेगमेंट में हो। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डेटा एनालिटिक्स में काम करने के लिए आपको काफी सारे लर्निंग स्किल सेट सीखनी जरूरी है। तो इसी कोर्स में हम आपको वो कंप्लीट लर्निंग देंगे और साथ में इंटर्नशिप में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए इस सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल जानते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा इस कोर्स के शेड्यूल के बारे में। तो ये कोर्स रहेगा 3 मंथ। सैटरडे संडे इसके सेशंस रहेंगे, 2-2 घंटे के सेशंस होंगे और इसमें आपको कंप्लीट लर्निंग मिलेगी। तो क्या लर्निंग मिलेगी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 3 महीने कंप्लीट लर्निंग, इसके बाद आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, उसका सर्टिफिकेशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ में प्लेसमेंट असिस्टेंस भी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है, इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगी। चलिए पहले वही देखते हैं कि लर्निंग क्या होगी। So in the first we will going to discuss module 1, which is introduction to healthcare AI ecosystem. In this we covered evolution of AI in healthcare data landscape, then electronic health record, then clinical decision support system, then healthcare analytics life cycle, then AI ethics in healthcare, then HIPAA and healthcare data privacy. Also we covered healthcare use cases. It includes patient risk prediction, disease diagnosis, hospital resource optimization, drug discovery. Then we will cover in the next module, that is Python programming fundamentals. In this you will get Python basics, variable and data types, operators, then control statement, then functions. Then in that other topics is healthcare applications, which include patient data processing, medical report automation, then health data cleaning. Then in hands-on you will got to learn patient registration system, hospital billing analysis. Then in the next module, which is module number 3, Python libraries for healthcare. It include topics which include that NumPy, then Pandas, then Matplotlib, then Seaborn. Then in healthcare data sets you will got to learn patient record, disease statistics, healthcare utilization data, and in the lab healthcare KPI dashboard. This is all about this module. Then in the next module, that is statistics for healthcare analytics. It includes descriptive statistics, then measure of center tendency, then measure of dispersion, then probability concepts, then sampling techniques, then confidence intervals, then hypothesis testing. Then it also includes healthcare application, which is include in clinical trial, epidemiological studies, then disease prevalence analysis. In the lab, we will got to know COVID data set analysis, then patient outcome analysis. Then we move to the next module, which is healthcare data analytics, which covered healthcare data types, data cleaning, missing value treatment, outliers detection, then data transformation. Next, you'll got to know analytics techniques, which is involved descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, prescriptive analytics. Then in healthcare use cases, we are going to teach you the readmission analysis, then mortality risk assessment, then patient segmentation. In the lab work, you will got to know hospital performance analytics dashboard. And in the next module, you will got to know machine learning fundamentals. It covers machine learning workflow, feature engineering, train test split, model evaluation, bias variance trade-off. Then healthcare application cover disease prediction, healthcare cost prediction, risk stratification. And then module number next, which cover supervised learning, which cover first algorithms. It is including linear regression, then logistic regression, then decision trees, random forest, support vector machine. Then healthcare project, it covered diabetes prediction, heart disease prediction, stroke risk prediction, accuracy precision, recall, F1 source, ROC, AUC. Then in the next module, unsupervised learning, it include clustering, KMAS, hierarchical clustering, DBS scan, then PCA.
and it include the patient segmentation, disease pattern discovery, healthcare resource planning, and in the lab work chronic disease clustering. Then in next module you will got to know neural network fundamentals, perceptron artificial neural network, forward propagation, then back propagation optimization techniques. And in the next you will got to know deep learning and TensorFlow and PyTorch. It covered TensorFlow, then Keras, PyTorch, model training, hyperparameter tuning, and in the application you will got to know ICU patient monitoring, disease progression prediction. Then in the model number next, CNN for medical imaging. It covers convolutions, neural network, then image classification, then object detection, then segmentation. And in the healthcare application, it cover X-ray analysis, MRI analysis, CT scan analysis. Lab work cover pneumonia detection from chest X-ray, brain tumor classification. Next part model covers sequence model in healthcare. It include RNN, LSTM, GRU, attention mechanism. In an application, you will got to know EHR time series analysis, then patient monitoring analysis system, then disease progression forecasting. Then in the model number next, foundation of generative AI. It covers generative AI overview, large language model, then transformers, then GPT architects, then prompt engineering, then healthcare application of this cover medical chatbot, clinical documentation, medical literature review. And in the next model, healthcare LLM application. It cover clinical summarization, medical report generation, clinical coding assistance, healthcare knowledge assistance. Then which used a tool which is used, it include OpenAI APIs, then Hugging Face, then LangChain, and lab work covered AI medical assistant. Then in the next model you will got to know retrieval augmentation generation. It is RAG. It include vector databases, embedding, then retrieval system, knowledge grounding. In application, it cover hospital knowledge base, clinical guidance assistant, medical research assistance. Then next model, fine tuning healthcare AI model. It cover transfer learning, domain adaptation, LoRa fine tuning, PEFT healthcare data set preparation. Okay, then healthcare model cover bio BERT, then clinical BERT, then med pan concept, then healthcare specific LLM. Then lab work cover fine tuning medical question answering model. Then the next one, agentic AI for healthcare. It covers AI agent, multi-agent system, healthcare workflow automation, clinical decision agent. Tools covered LangGraph, Crew AI, MCP concept. And then the lab work you will got to know healthcare multi-agent assistant. So this is all about our complete course information. This is end to end. We will cover here AI, okay, the generative AI, machine learning, everything and related tools you will got to know. After that, one last week we will tell you one project and the topics will be different. Okay, you have to choose the topic, and so there are different tools and the techniques which are used as follows. That is Python, Jupyter Notebook, then Pandas, then NumPy, then Matplotlib, then Seaborn, then Scikit-learn, then TensorFlow, then PyTorch, OpenCV, Hugging Face, LangChain, LangGraph, ChromaDB, FAISS, OpenAI API, Streamlit. एट द एंड आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा अगर हम एनलिस्टेड करें तो क्या क्या होता है यहाँ पे एनालाइज हेल्थ केयर डेटा सेट्स यूजिंग पाइथन एंड स्टैटिक्स, ये कंप्लीट आप एनालाइज करना सीख जाएंगे. बिल्ड प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर एनालिसिस सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन बना सकते हैं जो आप अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तभी भी आपके लिए यूजफुल है. अगर आप क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में काम करें ये यूजफुल है. डेवलप मशीन लर्निंग मॉडल जो डिसीज प्रेडिक्ट कर पाए इसके लिए, क्योंकि डिसीज प्रेडिक्शन ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है. तो इसके लिए मशीन लर्निंग कैसे काम कर सकता है, इसके लिए आप उसको डेवलप कैसे करें ये आप यहाँ पे सीख जाएंगे. Create deep learning solution for medical imaging, then implement a healthcare specific generative AI application, then build RAG based healthcare knowledge assistant, then fine tune domain specific healthcare AI model, then develop agentic AI solution for healthcare workflow, then deploy end to end healthcare AI application. तो AI जो होता है ना, जो हेल्थ केयर में यूज होता है, एक तो अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे कैंसर से बड़े डिसीजेस प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है. इसके लिए काफ़ी ये इसका डिमांड ज़्यादा है.
एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कीप करने के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स में या R&D में यूज होता है, इवन जो क्लिनिकल ट्रायल्स में सिमुलेशंस का जो वर्क है इसके रिलेटेड AI में इसका यूज होता है। पर्सनल केयर, बेटर लाइक आउटकम्स, इसके लिए ये यूज होने वाला है। तो इसमें काफ़ी सारे ओपनिंग्स भी होते हैं, इंडस्ट्री में पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हम इसमें क्या क्या बेनिफिट देने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको कंप्लीट लर्निंग मिलेगी इस कोर्स की। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग मिलेगी, नॉट ओनली थ्योरेटिकल, कंप्लीट हैंड्स ऑन लर्निंग। इसके लिए आपके पास लैपटॉप होना काफ़ी ज़रूरी है, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर PC होगा तभी चलेगा। देन द नेक्स्ट वन, सर्टिफिकेशन, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट इंटर्नशिप भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हैंड्स ऑन लर्निंग यहाँ पे, प्रोजेक्ट वर्क हम आपको यहाँ पे देंगे। इसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ मतलब जो भी ओपनिंग्स होती है ऑल ओवर पैन इंडिया वी आर एबल टू प्रोवाइड यू, और आल्सो गाइड यू हाउ टू अप्लाई। इंटरव्यू के लिए भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसके अनुसार आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। सेशंस आर लाइव बट एट द सेम टाइम रिकॉर्डिंग भी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फॉर फर्दर रेफरेंसेस एंड हेल्प। तो ये सारी कंप्लीट लर्निंग है, तो ये आपके लिए बहुत आइडियल कोर्स है। फार्मेसी स्टूडेंट्स, लाइफ साइंसेस स्टूडेंट, मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स और अदर रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है जो AI में करियर करना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स में करियर करना चाहते हैं, इनके लिए आइडियल कोर्स है। तो इसका फीस कैसे, इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं, तो इसकी फीस है 25,000। ओके, ये फीस है 30 जून 2026 तक ही है, ठीक है। ये 25,000, इसके बाद जो फीस होगी वो होगी 30,000। ओके, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कैसे कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिलअप करें, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली एनरोलमेंट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक रेज़ोपे की लिंक दी है, उसको क्लिक करें, नहीं तो इस नंबर पे भी डायरेक्टली आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वंस यू पे, यू जस्ट हैव टू शेयर योर नेम, ईमेल, क्वालिफिकेशन, लोकेशन। उसके बाद हम आपको ईमेल कंफर्मेशन देंगे और ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, उसको डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं, आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गई है। और फिर भी कुछ क्वेरी, कोई भी डाउट है तो हमें डेफिनेटली कनेक्ट करें, गूगल फॉर्म दिया है उसको फिलअप करें। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के समय में, और आने वाले कई सालों तक एक अच्छा पैकेज आपको चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो AI और डेटा एनालिटिक्स ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो के साथ ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गई है। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, अनाउंसमेंट अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।